So in economics today, we will be studying the chapter called as utility analysis. We will be studying this chapter in very detailed way. Utility analysis. When we describe about the word utility, we come across one particular word called as human wants. You should remember that human wants are the wants, matlab needs. There are many human wants are there. When one want is over, other want arises. Human wants are many. And in short, I can say they are unlimited. In short, we can say that the human wants are unlimited. That means what? When one want is satisfied, another want arises. When one want is satisfied, another want arises. The human wants are unlimited. Now, when we see that we are having some wants, so we need to satisfy our wants. How do we satisfy our wants? How do we satisfy our wants? So, uska simple answer hai, we satisfy our wants with the help of goods and services. We will be utilizing various types of goods as well as services to satisfy our wants. And definitely यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि जो goods होते हैं, जो commodity होते हैं, जो goods है, जो commodity है, उनके पास एक power होता है जिससे हम अपने wants को satisfy कर सके. Madam Nandini Gupta is not able to join the lecture. Okay, madam is coordinating. Tanmay. अभी अभी आ रहा है आवाज बराबर से. Okay. So every commodity has some power. हम उन commodities के power को use करते हैं अपने want को satisfy करने के लिए. तो commodity के उस power को हम लोग economics में we call as utility. The power of a commodity to satisfy human wants is called utility. Further, we describe some important concept. Let us see. Nandini, it's utility analysis. We take medicines to cure our illness. Whenever we are not well, we take up medicines. We intake air as well as water to survive. Matlab, can I say all these products are helping us to satisfy our wants? Certainly, yes. ये अपने wants को satisfy करते हैं. Thus, they possess utility because they satisfy our want.
Now, as these products satisfy our want, they have utility. They have utility. Similarly, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस से एक पंडित जी है, ब्राह्मण है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. कुछ प्रोडक्ट लेते हैं हम, जैसे एग्स है, फिश है, एक्सेट्रा. एग्स, फिश. कैन दिस प्रोडक्ट satisfy his want? Can you help me? Will this product satisfy his wants? No. तो इसके वांट को ये वाले जो प्रोडक्ट है, एग्स है, फिश है, ये इस ब्राह्मण के, इस पंडित जी के वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. Therefore, it will have no utility for this pandit. These products will have no utility. But at the same time, let us take an example of various products, various vegetables. I believe अभी problem आपके end पे है, हर्ष. Others can hear me properly. Log out and re-log in. या फिर पहले रिफ्रेश कर लो. अटक रहा है. Let me check. You are currently the only person in this conference. अभी मैंने मेरे एंड से तो पूरा रिफ्रेश कर दिया. No, if it is not clear, you will have to refresh your settings. So the products like vegetables, the products like fruits and vegetables, can they satisfy hunger of this Pandit ji? Certainly, yes. So it will have utility. Want satisfaction is the most important part of the utility. There must be satisfaction of the human want. तो देखो, जैसे वो एग्स एंड फिश इसके वांट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, इट विल हैव नो यूटिलिटी. बट fruits and vegetables can satisfy his wants. It will have utility for this Pandit ji. तो अभी और एग्जाम्पल लेते. टेक अप एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्सन who is having no sight. He is a blind person. So for him, can a cinema hall satisfy his want? No, क्योंकि वो जाएगा भी तो भी he will not be able to see the movies. It cannot satisfy his want. So no utility. No utility for him. Remember, a person will pay only if he gets utility. अभी जैसे for example, I am a vegetarian person. I will not go to the market and purchase fish or chicken or mutton. I will not pay for it because those products are not going to give me any utility. So a person will pay only if he gets utility. But if
he does not get any utility, he will not pay. And will not pay if no utility. वो पैसा जेब में वापस रख देगा. Utility नहीं है, तो no payment. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Now we describe types of utility. Very important types of utility. The first type of utility what we have is form utility. Form का मतलब होता है shape. Form का मतलब होता है shape. The utility what we get due to change in the shape or structure of the product. हम प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर को, हम प्रोडक्ट के शेप को जब चेंज करेंगे और उसमें से जो यूटिलिटी जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी. अभी जैसे वी टेक एग्जांपल, अ लॉग ऑफ वुड. एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग ऑफ वुड. उसको अच्छे से स्ट्रक्चराइज करके वी कैन कन्वर्ट इट इनटू फर्नीचर. लॉग ऑफ वुड कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर. तो ये जो फर्नीचर का यूटिलिटी है will be called as form utility. Take another example, cotton. See, these are the flowers of cotton. उसको प्रोसेसिंग करके पहले इस कॉटन पे से धागा बनाया जाता है, धागे में से कपड़ा, और कपड़े में से अपने क्लोथ्स जैसे सलवार सूट्स और वो सब बनाया जाता है. तो कॉटन कन्वर्टेड इनटू क्लोथ. तो इस क्लोथ का जो यूटिलिटी है विल बी कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी. Is the first type of utility clear? Log of wood converted into furniture, cotton converted into cloth. Then second type of utility we have is place utility. The utility of a commodity will increase due to change in its place. किस place के बारे में हम बात कर रहे हैं? Change in its place of consumption. Change in its place of consumption. अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं लास्ट ईयर आई वेंट टू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली. वहां पे यू नो देयर इज एक्सेसिव अवेलेबिलिटी ऑफ एप्पल्स. मनाली में एप्पल्स वहां पे बहुत मिलते हैं. तो वहां पे जो लोकल फार्मर्स है ना, वो लोग विजिटर्स के लिए, मतलब जो टूरिस्ट है उनके लिए एप्पल्स बेचते हैं. मगर कैसे? तो पूरा एक टोकरी भर के जो एप्पल है वो 100 रुपए में बेचते हैं. पूरा एक टोकरी भर के एप्पल 100 रुपए में हम लोग खरीद के कार में रखते थे और वही खाते रहो ट्रैवलिंग में. मगर वही एप्पल अपने यहाँ पे 1 kg के लिए वी नीड टू पे 150-180 रुपीज. एम आई राइट? तो आई कैन टेल यू दैट देर आर two different types of places. The first type of place what we have is place of abundance. और दूसरा प्लेस होता है प्लेस ऑफ स्केयरसिटी. तो जो प्रोडक्ट
प्लेस ऑफ अबेंडेंस में रहता है ना, वहां पे उसका यूटिलिटी कम होता है, मगर जब उसी चीज को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लेस ऑफ अबेंडेंस से ट्रांसपोर्ट किया टू द प्लेस ऑफ स्केयरसिटी, जैसे मुंबई में वी डोंट हैव एप्पल गार्डन्स, तो वो मनाली से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते, तो एप्पल का जो यूटिलिटी यहाँ पे है मुंबई में will be called as place utility because it's a place of scarcity. अभी जैसे vegetables from farm, vegetable from farms are transported to vegetable market. For example, aviation, shipping, infrastructure, warehouse, railways, ये सारी चीजें जो है यूजफुल होती है टू क्रिएट प्लेस यूटिलिटी. In fact, I will consolidate it into one word called as transport facility. Remember, place utility is created by transport facility. Place utility is created by transport facility. Third type of utility we have is time utility. A utility of a commodity increases with change in the time of utilization. Remember, अभी आप देखो पिछले 2-3 दिन से द एटमॉस्फेयर इज स्लाइटली बिकमिंग कोल्ड. यू माइट हैव ऑब्जर्व, थोड़ा ठंडा चालू हो गया है. एंड बाय बिगिनिंग और मिड ऑफ दिसंबर क्या हो जाएगा, फुल फ्लेज विंटर्स चालू हो जाएंगे. आप लोग क्या करोगे, आपने अपने घर पे जो वुलन क्लोथ अच्छे से पैक करके अपने वार्डरोब में कहीं पे रखे रहेंगे, उसको निकाल के यूज करोगे. बाकी टाइम वो वुलन क्लोथ आपने अच्छे से पैक करके रख दिया है, बट विंटर्स में हम उसको निकाल के यूज करेंगे. तो विंटर्स में उसका यूटिलिटी रहेगा, समर्स में यूटिलिटी नहीं है. देन दैट इज कॉल्ड टाइम यूटिलिटी. जैसे अम्ब्रेलास, umbrella will have utility during monsoons. Take example of woolen clothes, they will have utility during winters. Take example of cotton cloth, cotton cloth will have utility during summers. तो इन सब का जो यूटिलिटी है shall be called as time utility. Remember, time utility is created by storage facility. With the help of storage we can create the time utility, और जब जरूरत है तब निकाल के उस प्रोडक्ट को यूज करना is time utility. Then next type of utility what we have is called as service utility. Remember, utility of professionals like doctors, lawyers, teachers, etc. They help us to satisfy our wants. तो इनके सर्विसेज का जो यूटिलिटी होता है दैट इज कॉल्ड सर्विस यूटिलिटी.
The next one we have is possession utility. Utility arising due to transfer of ownership is called possession utility. अभी जैसे we take example of a seller. This seller is selling vegetables into the market. He sells the product to the buyer. So this transfer of vegetables from seller to buyer, तो buyer को उसका जो utility रहेगा, that would be called as possession utility. Then next one, we have is knowledge utility. Utility of a commodity will increase by acquiring knowledge of the same. अभी जैसे for example mobile, आपके पास जब कोई आपने नया मोबाइल लिया तो आपको वो मोबाइल के फंक्शन समझने को थोड़ा टाइम लगेगा, बट when you use that function, the utility of that mobile will increase for you. So that utility of mobile will be called as knowledge utility. वैसे ही we take example of laptops. लैपटॉप का भी जो यूटिलिटी है इज नॉलेज यूटिलिटी. आपको उसके फीचर्स फंक्शंस के बारे में जितना जानकारी मिलेगा उतना उसका यूटिलिटी बढ़ेगा. Then that is knowledge utility. So that are types of utility, 6 types. Let us summarize. Form utility due to change in shape. Time utility due to change in time of consumption. Place utility due to change in place of consumption. Service utility, utility of the services of the professionals. Knowledge utility by increasing the knowledge, and possession utility by the way of transfer of ownership. Any doubt in those 6 types of utility to you?